Exercise 4B, question number 10. Cot inverse 9 plus cosec inverse under root 41 upon 4 is equal to pi by 4. In this question, we have given that two different ratio. One is cot inverse 9, cot inverse, and second is cosec inverse. So, first we convert both into a particular inverse ratio, inverse function. So since cot inverse 9 plus cosec inverse, taking left hand side, cot inverse 9 plus cosec inverse under root 41 upon 4. Since we know that cot inverse x is equal to tan inverse 1 upon x by reciprocal law of sine inverse of inverse trigonometry. Similarly, we can write cosec inverse x is equal to tan inverse 1 upon under root x square minus 1. So cosec inverse under root 41 upon 4 is equal to tan inverse 1 upon under root square of under root 41 upon 4 will be 41 upon 16 minus 1. Simplified, we get tan inverse 1 upon under root 41 minus 16 upon 16. Since 41 upon minus 16 is equal to 25 and it is square of 5 and 16 is square of 4. So 1 upon tan inverse 1 upon 5 upon 4, then we get cosec inverse under root 41 upon 4 is equal to tan inverse 4 upon 5. Now question will be changed. Cot inverse 9 plus cosec inverse under root 41 upon 4 is equal to tan inverse 1 upon 9 plus tan inverse 4 upon 5. Now we know that formula of tan inverse x plus tan inverse y. Since tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y, tan inverse x plus y upon 1 minus x plus x into y. Now apply here, x is equal to 1 upon 9 and y is equal to 4 upon 5. So tan inverse 1 upon 9 plus 4 upon 5 whole upon 1 minus 1 upon 9 into 4 upon 5. Simplified, tan inverse 5 plus 9 into 4 36 upon 45, and in denominator 9 into 5 45 minus 4 45 minus 4 upon 45. 45 is cancelled by 45 and 36 plus 5 is 41 and 45 minus 4 is 41. So we get tan inverse 41 upon 41 is equal to tan inverse 1 because 41 is cancelled by 41, and tan inverse, value of tan inverse 1 is pi by 4, that is equal to right hand side. Hence prove this question. Exercise 4B, question number 11. 2 tan inverse 1 by 3 plus tan inverse 1 by 7 equal to pi by 4. In this question, tan inverse is given in the submultiple 2 tan inverse x. We can apply formula only when we have given that tan inverse x plus tan inverse y, not product of any constant. So we convert 2 tan inverse 1 by 3. We convert 2 tan inverse 1 by 3 into tan inverse. Since we know that 2 tan inverse x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. Here x is equal to 1 by 3. So 2 tan inverse 1 by 3 is equal to tan inverse 2 into 1 by 3 upon 1 minus square of 1 by 3, 1 upon 9. Simplified, we get tan inverse 2 upon 3 into 9 minus 1, 8 upon 9. So it will be 9 upon 8, 2 by 3 into 9 upon 8. 8 is cancelled by 2 4 times and 3 is cancelled, 9 is cancelled by 3 times. So we get 3 upon 4. 2 tan inverse 1 by 3 is equal to tan inverse 3 by 4. Now left hand side will be tan inverse, in the place of 2 tan inverse 1 by 3 we can write
tan inverse 3/4. Tan inverse 3/4 plus tan inverse 1/7. Now we apply this formula. Tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Since x is 3/4 and y is 1/7, then replace x and y by these values 3/4 and 1/7. So we get tan inverse 3/4 plus 1/7 whole upon 1 minus 3/4 into 1/7. Simplified 7 3 जा 21 plus 4 upon 4 into 7 28 upon 28 minus 3 28 minus 3 upon 28. 28 is cancelled by 28. 21 plus 4 25 25 25 is cancelled by 25. We get tan inverse 1 and tan inverse 1 is equal to pi/4 right hand side. Question number 12. Sin inverse 4/5 plus 2 tan inverse 1/3 equal to pi/2. One is sin inverse, second 2 tan inverse. तो जब 2 tan इनवर्स दिया तो पहले 2 tan इनवर्स को या 3 tan इनवर्स दिया है तो 3 tan इनवर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? tan इनवर्स में. और sin इनवर्स को भी हमें किस में करना पड़ेगा? क्योंकि रेशो सेम होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इनवर्स फार्मूलाज के लिए, इनवर्स आइडेंटिटीज के लिए. तो हम sin इनवर्स को ये tan में है ही 2 tan इनवर्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे. तो sin इनवर्स को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? tan इनवर्स में. अब taking left hand side sin inverse 4/5 plus 2 tan inverse 1/3. अब sin inverse को पहले हम tan inverse में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो since sin inverse x equal to tan inverse x upon under root 1 minus x square. तो ये x परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हो गई 1, देन बेस विल बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये हो गया tan इनवर्स में परपेंडिकुलर x अपॉन base under root 1 minus x square. Now we want to find out sin inverse 4/5. Sin inverse 4/5 is equal to tan inverse x, value of x 4/5 into 1 upon under root 1 minus square of 4/5 will be 16 upon 25. Now solve it. Sin inverse 4/5 is equal to tan inverse 4 upon 5 into 25 minus 16 9 under root and under root of 9 will be 3 and under root of 25 will be 5. So 5 is 5. 5 is cancelled by 5. Then we get sin inverse 4 upon 5 is equal to tan inverse 4/3. 2 tan inverse 1/3 अब भी निकाला था हमने कि 2 tan inverse x equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. So 2 tan inverse 1/3 इसको सॉल्व करके हमने निकाला था tan inverse 3/4. तो इसको यहाँ से नोट कर लेना. तो मैंने डायरेक्ट नोट कर दिया है. इन प्रीवियस क्वेश्चन 2 tan inverse 1/3 equal to tan inverse 3/4. So left hand side will be, now left hand side will be tan inverse 4/3 plus tan inverse 3/4. Tan inverse 4/3 plus tan inverse 3/4. Now apply formula tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus x into y. जैसे हम सॉल्व करते हैं तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया 1. 1 minus 1 will be 0 and when denominator is 0 then 1 upon 0 will be infinitive. So we get tan inverse infinitive that will be equal to pi/2 is equal to right hand side. 13th question. There are 3 tan inverse functions. Tan inverse 3/4 plus tan inverse 3/5 minus tan inverse 8 upon 19 equal to pi/4. Taking left hand side, since tan inverse 3/4 plus tan inverse 3/5 ये दोनों को हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि अप्लाई दो पर ही होगा हमारे जो फार्मूले हैं. तो इस पे हम और साइन भी चेंज है. तो tan inverse 3/4 plus tan inverse 3/5 हम अप्लाई कर देते हैं. tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus x into y. तो tan inverse 3/4 plus 3/5 upon 1 minus 3/4 into 3/5 minus tan inverse 8 upon 19. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. tan inverse
5 into 3 15, 4 into 3 12, 15 plus 12 upon 20 and 4 into 5 20, 20 minus 9. ठीक, तो हमने क्या गेट किया यहाँ से इज इक्वल टू tan इनवर्स 27 upon 11 minus tan inverse 8 upon 19. Now apply tan since tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus x into y. Now apply this formula. We get tan inverse 27 upon 11 minus 8 upon 19 whole upon 1 plus 27 upon 11 into 8 upon 19. When we solve it, 11 into 19 is cancelled by 11 into 19. So we get 19 into 27, 513 minus 88 upon 11 into 19, 209 plus 27 into 8, 216. Now we get tan inverse 425 upon 425. That 425 is cancelled by 425. Then we get tan inverse 1, and tan inverse 1 will be always pi by 4. So right hand side. ये अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. 14th क्वेश्चन. tan inverse m upon n minus tan inverse m minus n upon n plus n taking left hand side. तो यहाँ पर tan inverse m, जब भी tan inverse में होता है तो tan inverse को हम एक ही तरह से नहीं नोट कर सकते. हमने कहा tan inverse x plus tan inverse y इक्वल टू tan inverse x plus y upon 1 minus x into y. लेकिन यदि इस टर्म में हमें दिया हुआ है कि we have tan inverse x plus y upon 1 minus xy x into y, then we can write it also tan inverse x plus tan inverse y. तो हम यहाँ पर mn दोनों दिख रहे हैं, तो tan inverse m upon n, यहाँ मैंने लेफ्ट हैंड साइड की tan inverse m upon n, टेक आउट कॉमन n इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. जब हम n को यहाँ से न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कॉमन लेते हैं तो ये हो गया tan इनवर्स इन द साइड द ब्रैकेट n m अपॉन n, यहाँ से कॉमन ले तो m अपॉन n माइनस 1, और नीचे डिनोमिनेटर से भी n कॉमन ले लिया तो ये हो गया m अपॉन n प्लस 1. n इज कैंसिल्ड बाय n. नाउ tan इनवर्स m अपॉन n माइनस tan इनवर्स, इसको हम नोट कर सकते हैं m अपॉन n माइनस 1 अपॉन 1 को इस साइड नोट कर दिया 1 प्लस इसको 1 इंटू एम अपॉन एन लिख सकते हैं. अब ये क्या फार्मूला बन गया x माइनस वाई, x के प्लेस पर एम अपॉन एन, y के प्लेस पर 1 प्लस x एम अपॉन एन इंटू वाई 1. ये बन गया tan इनवर्स, सिंस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. तो इसको हम लिख देते हैं tan इनवर्स x. तो ये tan इनवर्स m अपॉन n पहले का, माइनस x के प्लेस पर कितना है m अपॉन n, तो tan इनवर्स m अपॉन n प्लस माइनस 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 आना था तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस tan इनवर्स 1. tan इनवर्स m अपॉन n, tan इनवर्स m अपॉन n से कैंसिल हो गया तो बच गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 4 राइट हैंड साइड. यही हमें प्रूव करना था. तो ये हो गया टोटल 14th क्वेश्चन.